Welcome back after a brief interval of few weeks. Okay, we start with the new system now. Central nervous system. नर्वस सिस्टम का कुछ हिस्सा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना? एएनएस पढ़ लिया और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी पढ़ लिया. नर्व फाइबर्स कितने तरीके होते हैं, कहां से कहां जा रहे हैं, स्केलेटल मसल के साथ पढ़ाया होगा ना नर्व के बारे में. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है वो हम पढ़ चुके हैं. उसका दोबारा जिक्र आएगा हमारे फर्दर डिस्कशंस में. सो वी स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ब्रेन, नर्वस सिस्टम. क्योंकि इस ऑर्गन की वजह से ही हमको पता लगता कि हम हैं. हमारे होने का जो एहसास है वो इसी ब्रेन से रिलेटेड है. अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है. वो एहसास ही सबसे ज्यादा जरूरी है. तो हम उसमें देखेंगे कि ये एहसास कैसे पैदा होता है और ये ब्रेन सारे बॉडी के फंक्शंस को कैसे कंट्रोल कर रही है. 3 basic requirements are there for the nervous system to act according to your wish. 3 चीजें हैं. Sensory detection. You see, whatever we do in our life is because of 2 reasons. 2 तरह का इनपुट सोच के अंदर जाता है. One is the information from the periphery. Periphery का मतलब एनवायरमेंट हम जानते हैं सेल्स में, बॉडी में, ऑर्गन्स के लिए 2 तरह का होता है. One is the outside environment in which we are surviving, and other is the internal environment of the body, because the chemical changes associated in the internal environment also influences the neuronal activity. Most of the time here we will be discussing about the influence of the outside source information. So 3 things are required for the brain to function, to act, to behave. One is sensory detection. Environment में क्या हो रहा है हमारे चारों तरफ वो हमें जानना जरूरी है. That will decide how do we act according to that stimulus. Okay. Second is the information processing. So whatever sensory information the senses are gathering from outside the environment, that has to be processed, because a single type of the information does not determine your behavior. Multiple inputs are there and there is a plus and minus going on, addition, subtraction is going on in the brain at various levels, and ultimate outcome will decide what to act, how to act, how much to act, where to act. All the decisions are to be taken after the information reaching to the brain is processed completely. So information processing has to be there before the action starts. And thirdly, all these 2 things after the sensation reaching to the brain, getting analyzed, the brain commands an action, and that action is visible in the form of the behavior of the person. So sensory detection पहला हिस्सा है, whereby the neurons, because the receptors in the periphery we will be discussing about are the extensions of the neuron themselves, and those neurons are the sensory neurons. Okay. So what the sensory neurons are there, what their function is mainly that they are able to transduce, change different kinds of the energies which imprint upon the body into the electrical signals. Okay. That is the mechanism of the, or that is the process of transduction. उसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं. हमारे ऊपर कई तरह की एनर्जीज आ रही हैं. It can be mechanical, electrical, chemical. All types of the stimuli are there, imprinting on the body, on the sense organs, including the sound, chemicals, temperature. All these are there, and these sensory neurons are able to convert all these different types of the energies into the electrical signals, which reaches to the brain ultimately. Of course, to convert the different energies, we will require different type of the neurons. Different type of the receptors will be there. एक ही रिसेप्टर सारे काम नहीं कर सकता, अलग अलग रिसेप्टर की जरूरत पड़ेगी. उनकी हम डिटेल्स में बात करेंगे. So that is the sensory detection which is required. Second is the information processing. Sensory detection हो गया, अब इसका प्रोसेस होगा. प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? You see, when I touch the dorsum of my palm with the finger, okay,
This is the information. This is information of touch. And if I touch it with slight pressure, pressure is also there. So two types of stimuli are there. When this stimulus is going via the nerve fibers to the central spinal cord first of all, and then the brain, this information does not reach purely as it arises from here. जैसे यहाँ से अराइज हुई थी वो प्योरली ऊपर तक नहीं पहुंचती. At multiple places the inputs are there and information may change completely, determining the ultimate behavior. So processing means transmission. So during transmission of the information also the information gets processed. Process का मतलब उसको कम किया जा सकता है, उसको बढ़ाया जा सकता है, या उसको बिल्कुल बंद भी किया जा सकता है कि वो ब्रेन में पहुंचा ही नहीं, ब्रेन में पहुंचे ही नहीं वो इंफॉर्मेशन. दैट इज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. So transmission, during transmission is there, transformation signals by the combining with other signals. The impulse arising from or information arising from a certain receptor reaches to the spinal cord to a neuron. That neuron is receiving information from other sources also. So that combination of the information leads to the transformation or change in the information. That changes, signal changes, then the information which has reached, many times it is useless, it is discarded after some time, we forget about it. But many times it is important, it is stored, and during storage also the information can be changed, it can be modified. So storage of the information is a part of the information processing. Then process of retrieval, हमने जो स्टोर की थी इंफॉर्मेशन को दोबारा रिकलेक्ट भी करने का काम आता है वो, उसको हम रिट्राइवल कहते हैं. दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. एंड ऑल दीज थिंग्स यूज सेंसरी इंफॉर्मेशन फॉर द परसेप्शन, फॉर द थॉट प्रोसेस एंड फॉर द लर्निंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन द मोटर कमांड्स एंड इमोशंस. सो ऑल दीज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लीड्स टू द स्टोरेज ऑफ द प्रोसेस, चेंजेस द मोटर कमांड्स, हम जो एक्ट करते हैं उसको मॉडिफाई कर सकता है, इमोशनल एक्सप्रेशंस को भी मॉडिफाई कर सकता है. सो ऑल दीज फॉर्म द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फिनोमेना. हम इनकी डिटेल में बात करेंगे, ये सिर्फ प्रिलिमिनरी है. एंड थर्ड इज द बिहेवियर. वट एवर इंफॉर्मेशन हैज रीच्ड टू द ब्रेन leads to certain action by the body. That action may be directly visible or it may not be visible in the form of the hormonal changes are taking place, or certain changes in the GIT or subconscious changes are there in the body function, that can be there. So behavior may be covert, जो दिखे नहीं उसको हम कहते हैं covert behavior है, दिख नहीं रहा मगर हो रहा है वो. और it can be an observable behavior, दोनों तरह से मैनिफेस्ट कर सकता है ब्रेन का एक्शन, covert और observable. ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज द मोटर एक्ट. बेसिकली हम जो करते हैं वो दिखता है, हाथ पैर हिलते हैं, हमारे जबान हिल रही है, आंखें हिल रही है, दैट इज अ मोटर एक्ट. वट एवर वी डू इज सच एज मूवमेंट और ऑटोनॉमिक रेस्पॉन्सेज भी हो सकती है इसके अंदर. चेंजेस इन द ब्लड प्रेशर कैन बी देयर. एंड इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, लैंग्वेज इज अ फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन ऑल्सो. ओके, सो दीज आर द बिहेवियर विच आर एक्सप्रेस्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट गोइंग टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. So ultimately we come to the nervous system itself. वो सिर्फ बिगनिंग था, प्रस्तावना जिसको कहते हैं. So nervous system can be functionally as well as anatomically divided into two parts: central nervous system and the peripheral nervous system. The part of the nervous system which resides within the cranial cavity and the spinal column is the part of the central nervous system, and all the other parts which are outside this domain are the parts of the peripheral nervous system. So central nervous system consists of different components. You can see one is the brain and second is the spinal cord. पहला brain है, दूसरा spinal cord है. Brain anatomically can be divided into three components depending upon the level of control of the body functions. Forebrain consisting of the telencephalon and diencephalon. ये brain का ऊपर का part है. Then midbrain is there. Hindbrain is there. Midbrain lies between the hindbrain, that is pons, and the diencephalon.
Hindbrain consists of pons, medulla and the cerebellum which lies in the posterior cranial fossa. ये पढ़ा दिया क्या एनाटॉमी में, ठीक है ना, posterior cranial fossa के अंदर ये. And midbrain, pons and medulla constitute the brain stem. ब्रेन स्टेम के अंदर सेरिबेलम नहीं आता, ध्यान दीजिएगा, इट्स अ डिफरेंट पार्ट. ओके, इसके फंक्शन भी अलग है. एंड देन वी हैव गॉट स्पाइनल कॉर्ड व्हिच रन्स फ्रॉम द सर्वाइकल और अदर वी कैन से कंटिन्यूएशन of the lower part of the medulla oblongata into the spinal canal is the spinal cord. ये आपका डायग्राम है, ये सब देखे हुए हैं आपके. अब आ जाते हैं असली मुद्दे पे. Two type of the tissues are grossly visible when we visualize the brain or the spinal cord. ये रंग के आधार पे है, फंक्शनली भी है. जो पार्ट ग्रेइश अपीयर होता है उसको हम ग्रे मैटर कहते हैं, और जो पार्ट व्हाइट अपीयर होता है उसको हम व्हाइट मैटर कहते हैं. द मैटर विच अपीयर्स व्हाइट इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द फाइबर्स विच आर प्रेजेंट देयर दे आर माइलिनेटेड फाइबर्स, एंड बिकॉज ऑफ द myelin sheath the color appears whitish. So it is a white matter and gray matter. Gray matter contains cell bodies of the neurons. वहाँ न्यूरॉन्स की सेल बॉडी है, उनमें माइलिनेशन नहीं होता, इसलिए वो ग्रे अपीयर होती है. एंड दी normally the level of intelligence of the person is measured in terms of the amount of the gray matter present. देखो साला ग्रे मैटर ही नहीं है इसके, तो क्या समझ में आएगा, है ना. तो उससे मेजर करते हैं ग्रे मैटर का. हालांकि इसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, मगर ऐसा कहते हैं और ऐसा कभी कभी देखने को मिलता भी है. So this gray and white matter are there. What is important is that in the spinal cord the gray matter is interiorly placed while the white matter is outside. ये जो येलो में दिखाया है ये व्हाइट मैटर है, नर्व फाइबर्स हैं इसके अंदर, सिर्फ नर्व सेल्स नहीं है. जबकि अंदर की तरफ जो दिखाई है वो ग्रे ही है बेसिकली. ये है ग्रे मैटर जिसमें कि सेल बॉडीज है न्यूरॉन्स की. ओके, so in the spinal cord the gray matter is interior, white matter is outside. But as we go into the brain, जब हम ऊपर ascend करते हैं तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है. ग्रे मैटर इज आउटसाइड, व्हाइट मैटर इज इनसाइड. क्यों? व्हाइट मैटर जो बाहर से जा रहा है वो अंदर से होकर के और ऊपर रिप्रेजेंट करेगा. अगर बाहर से होगा तो अंदर आना पड़ेगा उसको, वो थोड़ा तकलीफ हो जाता है अरेंजमेंट के हिसाब से. So white matter, gray matter is outside and white matter is interior in the brain. Cerebral cortex कहते हैं इसको. Gray matter and white matter are there. Then there are three coverings of the brain. Innermost is the pia mater, thin होती है, it is continuous with the tissue of the brain. Then we have got the arachnoid, and between the pia and the arachnoid we have got the fluid of the brain which is very very important. क्या कहते हैं उसको? cerebrospinal fluid, and the space is known as subarachnoid space. And outside we have got the thick fibrous layer, the dura mater, which contains the dural sinuses also. Okay. Then various nerves emerges from the brain. Cranial cavity से spinal cord से nerves निकलती हैं, तो जो cranial cavity से निकल रही है उनको कहते हैं cranial nerves कहते हैं. And in total there are 12 cranial nerves. Okay, नाम सबके पता है, होने चाहिए. और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं वो स्पाइनल नर्व्स कहलाती हैं. ठीक है. देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू नर्व फाइबर्स. जो क्रेनियल नर्व हैं और जो स्पाइनल नर्व हैं उनमें दोनों में बेसिक फर्क है. देखिएगा आप, क्रेनियल नर्व आर नॉट कवर्ड बाय द न्यूरोलिमल शीथ. न्यूरोलिमल शीथ इज फाउंड ओनली इन द स्पाइनल नर्व्स. जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व बाहर निकल रही हैं उन्हीं में न्यूरोलिमल शीथ होती है. दे आर वेस्टेड विद द connective tissue sheath that is known as neurolimal sheath, that is not found in the cranial nerves. Okay, does it make a difference? Yes, it makes a difference, because for if the nerve fibers are damaged, cut, then neurolimal sheath with the presence of the Schwann cells help to regenerate the nerve fibers. Schwann cells की वजह से, neurolimal sheath की वजह से जहाँ Schwann cells होते हैं, they are capable of reforming the damaged nerve fiber. So peripheral nerves after damage, after being cut, they can regrow and functional recovery is there. But in the case of the cranial nerves, because neurolimal sheath is not there,
recovery is relatively very slow and very small, otherwise it is not there. So that is the major difference between the cranial nerves and the spinal nerves. चलो चलो चलो. लोअर मोटर न्यूरॉन एंड अपर मोटर न्यूरॉन, ये मैं बता चुका हूं कुछ जो मैंने क्लास ली थी नर्वस सिस्टम की, डेमोन्स्ट्रेशन लिया था, ध्यान है? कुछ आधे बैच का लिया था, आधे का मैंने नहीं ले पाया था. मैं मोटर सिस्टम पढ़ाया था मैंने, हाउ टू एग्जामिन द मोटर सिस्टम इन अ पेशेंट. So lower motor neuron and upper motor neuron, the definition is important to remember and learn. Any neuron, motor means excitation of that neuron creates the motor activity in the body. Motion create करता है वो motor neuron कहलाता है. So all the neurons in the spinal cord or in the brain stem, mind it, maybe in the brain stem, that is midbrain, pons and medulla में भी हो सकते हैं, spinal cord में भी हो सकते हैं. All these motor neurons which are directly innervating the skeletal muscle fibers of the body. Skeletal muscle fibers face में भी होते हैं, ठीक है ना? उससे आपके cranial nerve से आ रही है सप्लाई जो है, और बाकी आपकी बॉडी की मसल फाइबर्स हैं. So all those neurons directly innervating the skeletal muscle fibers is a lower motor neuron. Simply है. लोकेशन उसका ब्रेन स्टेम में भी हो सकता है, लोकेशन उसका स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकता है. लोकेशन से नहीं है इसका कोई लेना देना. While the upper motor neuron, which is also located either in the cerebral cortex or in the basal ganglia or in the brain stem, which affects, modifies, controls the activity of the lower motor neuron, is an upper motor neuron. So lower motor neuron की activity को जो भी modify कर रहा है वो upper motor neuron कहलाता है. With one exception, we'll learn later on that there are certain sensory fibers coming from the muscle spindle का नाम मैंने बताया था demonstration में. Muscle spindles are the sensory receptors in the muscles. वहां से जो फाइबर्स आते हैं वो डायरेक्टली सिनेप्स करते हैं अल्फा मोटर न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और वो उसकी एक्टिविटी को मॉडिफाई भी करते हैं. बट दोज सेंसरी न्यूरॉन्स आर नॉट अपर मोटर न्यूरॉन्स. डू यू फॉलो माय पॉइंट? There are sensory neurons related with the spinal stretch reflex. The information is coming from the periphery. Neuron is a sensory neuron influencing the activity of the alpha motor neuron directly, but that sensory neuron is not an upper motor neuron. So upper motor neuron needs to be situated either in the brain, brain stem, cerebral cortex, brain stem and the basal ganglia. यहाँ पे अगर है तो वो अपर मोटर न्यूरॉन होगा जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है लोअर मोटर न्यूरॉन की एक्टिविटी को. दिस अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट इन द सेंस दैट बिकॉज द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, sometimes we have to exactly define what type of disorder it is and where can be the lesion located in the brain depending upon the manifestation in the patient. तो उसके लिए जानना जरूरी है कि कहां से हो सकती है प्रॉब्लम खड़ी आपके लिए. सॉरी, हो गया. देन वी कम टू द न्यूरॉन्स. ये भी सब जनरल डिस्कशन चल रहा है हमारा, स्पेसिफिक कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं. न्यूरॉन्स बहुत सारे हैं, अबाउट 100 बिलियन न्यूरॉन्स आर देयर एंड एनाटॉमिकली स्पीकिंग, जैसे तुम 250 बच्चे बैठे हो, नहीं बैठे 250 कम है, तो उनका सबका शक्ल सूरत अलग अलग है. काम एक ही है, पढ़ाई करना है ना, मगर सबकी शक्ल अलग है. इसी तरह एनाटॉमिकल वैरायटी 50,000 तरह की हो सकते हैं न्यूरॉन ब्रेन के अंदर, सबकी शेप अलग अलग है. फंक्शन तो वही है. जो क्या फंक्शन है न्यूरॉन का? What ultimately a neuron does? एक ही फंक्शन है. Either a neuron fires and does not fire. That's all. 0 and 1. Ultimate whole behavior of the human beings or any organism is determined by the simple phenomena that particular given set of neurons are firing an action potential by getting excited, or they are not firing an action potential. There is nothing in between them. ऐसा नहीं कुछ आधा एक्साइट हुआ और थोड़ा सा फायर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता. या तो एक्शन पोटेंशियल फायर करेगा या नहीं करेगा. इन बिटवीन नथिंग इज देयर. बट सेट ऑफ न्यूरॉन्स, ग्रुप ऑफ द न्यूरॉन्स, देयर एक्टिविटी अल्टीमेटली डिटरमाइन द ओवरऑल एक्टिविटी. ये मसल मैं ये उठाऊंगा तो
सारी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, मगर अगर मैं इसको उठाऊंगा तो ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा. दैट इज डिटरमिन्ड बाय द इंटीग्रेशन. फॉर डूइंग सर्टेन वर्क हाउ मच एक्टिविटी डू यू रिक्वायर, बट एक्शन इज सेम. Firing of action potential or not firing it. That's 0 and 1. That is the basis of the computers also, I think you know. 0 and 1. So neurons are there, and beside the neurons, the brain contains the connective tissue cells which are known as neuroglia. Neuroglial cells are there. ये neuroglial cells कई तरह के हैं, इसमें periphery वाले भी आगे ध्यान दीजिएगा. We have got the astrocytes, oligodendrocytes, microglia. These are the three major varieties of the connective tissue cell found in the brain. Then Schwann cells brain में नहीं होते, peripheral nervous system में होते हैं ये, ठीक है. Then satellite cells are found in the ganglia, and then ependymal cells are the lining epithelial cells of the central canal. The spinal canal है, उसमें जो lining है उनको हम ependymal cells कहते हैं. They are all connective tissue cells basically. Now we discuss about these connective tissue cells and their functions. Astrocytes, नाम से ही पता लग रहा है कोई स्टार शेप चीज होनी चाहिए. So astrocytes are the star shaped cells. Anatomically and functionally there are two varieties of the astrocytes. There are fibrous astrocytes and protoplasmic astrocytes. Protoplasmic astrocytes contains large number of protoplasm with the extension processes. The fibrous astrocytes contain less amount of the साइटोप्लाज्म. फंक्शन क्या है एस्ट्रोसाइट्स का? बहुत सारे फंक्शंस हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दे प्रोवाइड ब्लड ब्रेन बैरियर. हमने सीवीएस में बात किया था जब इसकी बात की थी कि ब्लड ब्रेन बैरियर इज ए बैरियर विच डज नॉट अलाउ एवरी सब्सटेंस इन प्रेजेंट इन द ब्लड टू क्रॉस द बैरियर एंड रीच टू द ब्रेन. ये बैरियर है जो कई चीजों को रोकता है. But in the brain also there are certain areas which are outside the blood brain barrier. उनको हम बाद में बात करेंगे, ठीक है. So two parameters are there which are forming the blood brain barrier. One we have discussed in the CVS, continuous lining of the endothelium without the presence of the pores. Capillary endothelial cells have got the tight junctions in the brain capillaries. तो वहां से आसानी से कुछ नहीं निकल सकता. जबकि बाकी जगह किडनी में फिल्ट्रेशन होता है बहुत ज्यादा, बाकी टिश्यूज में भी फिल्ट्रेशन होता है, लीवर में साइनोसॉइड्स होते हैं, कैपिलरीज होती ही नहीं है. एवरीथिंग कैन पास वेरी इजीली, इवन लार्ज मॉलिक्यूल्स आर देयर. बट इन द ब्रेन देयर आर टाइट जंक्शंस, एंड बिसाइड द टाइट जंक्शंस, दोज जंक्शंस ऑफ द कैपिलरी एंडोथेलियम दैट इज एनफोर्स्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द कवरिंग ऑफ द एस्ट्रोसाइट. एस्ट्रोसाइट बाहर से कवर करते हैं, इसलिए उसको वो स्ट्रेंथन करते हैं blood brain barrier को. That is very important function, providing blood brain barrier. Then they provide insulation, because whatever happening in the brain is the electrical activity basically, and that electrical activity may not spread to the surrounding tissues, so they provide the insulation also. The third thing is the very important again, regulate extracellular fluid potassium concentration. Why potassium is important in the extracellular fluid? Why potassium is important? There are three important ions which determine the electrical activity in the body: sodium, potassium and chloride. बाकी भी है मगर उनका उतना इन्फ्लुएंस नहीं है. सोडियम इन्फ्लुएंसेस द एक्टिविटी ऑफ द एक्ट पोटेंशियल जनरेट करता है, वो वहां इन्फ्लुएंस करता है. जबकि हर सेल का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिटरमिन होता है potassium concentration से. So it is the potassium which determines resting membrane potential, and we know that the level of resting membrane potential determines the ultimate excitability of the neural tissue. Excitability can be changed by change in the potassium concentration either intracellularly or extracellularly. Extracellularly ज्यादा manifest करता है क्योंकि हम dietary influence भी आता है उसके ऊपर. So these astrocytes are very important for regulating the EC of potassium concentration, thus maintains the excitability of the neurons. Then acts as a site of the current sink. Current sink का क्या मतलब समझे? फिजिक्स है ये तो.
करंट का मतलब आयंस की बात कर रहे हैं हम, आयनिक मूवमेंट। तो जो भी आयन एक्सेस में अगर होता है सराउंडिंग में, तो उसको ये जज्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सिंक हो जाता है उसके अंदर, तो उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। देन दे प्रोड्यूस ट्रोफिक फैक्टर्स। ट्रोफिक का मतलब क्या है? न्यूट्रिशन। ट्रोफिक का मतलब न्यूट्रिशन। So various growth factors are produced by the astrocytes which help in the regeneration and growth of the neural tissue. उनको हम trophic factors कहते हैं। Sixth is the uptake and metabolism of the neurotransmitters like glutamate and GABA. Because the neurotransmitters ये सबसे common है। Glutamate is the excitatory neurotransmitter in the brain, while the GABA is the inhibitory neurotransmitter in the brain. They are continuously released because of various activities going on. There are mechanisms for removal of these neurotransmitters from the site of their release, and one of the mechanisms is that they are taken up by the astrocytes also, so that they do not remain at the site of release for a longer duration. ज्यादा देर तक वो ना टिके वहां पे, इसलिए इनको हटाना जरूरी है. So astrocytes are helping in the metabolism specifically of the two neurotransmitters, glutamate and the GABA. Then they have the ability to communicate with the neurons. मतलब हम ये कहते हैं कि न्यूरॉन ही कम्युनिकेट करते हैं by firing the action potential. Okay, they communicate with the other neurons in the brain. But even the connective tissue cells have got the capability to communicate with both the neurons as well as the other connective tissue cells. ये एस्ट्रोसाइट्स भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट they do not communicate by firing the action potential. They communicate by the release of certain chemical substances. वो उससे communicate करते हैं. That is the communication process, and the most common mediator of this is the adenosine triphosphate. This is the molecule for the communication between the connective tissue cells of the brain. Then astrocytes also help to transport nutrients between the neurons and the capillaries. Transfer is there. And regulate blood flow by metabolic pathway involving the arachidonic acid. Arachidonic acid pathway से क्या बनता है? Which is vasoactive. Biochemistry है ये. Arachidonic acid is beginning of synthesis of which chemicals? Prostaglandins. Prostaglandins. Prostaglandin दोनों तरह की होती है. They are vasoconstrictors also, they are vasodilators also. Depend करता है हम किसकी बात करें. PGE की कर रहे हैं, PGF की कर रहे हैं, PG alpha की कर रहे हैं. All these are vasoactive substances. Prostaglandins are there, and the starting chemical is the arachidonic acid. It is a polyunsaturated fatty acid. Okay. That was about the astrocytes. Then comes the second one, oligodendrocytes. नाम से ही पता लग रहा है कोई छोटी चीज है. Oligo means small, oligarchy छोटा साम्राज्य, ठीक है. Oliguria कम यूरिन आ रहा है, यूरिन का वॉल्यूम कम हो गया. That's the oligodendrocytes. Cells with the small processes is known as the oligodendrocytes. What is important? What is their function? Oligodendrocytes are the cells which are responsible for myelination of the nerve fibers in the central nervous system. Peripheral nervous system myelination is done by the Schwann cells. Okay, and in the diagram of the nerve fibers you must have seen that in the peripheral nerves, in the diagram we have seen that at every internode, between the nodes, internodes are there, and at each place a Schwann cell is placed. So multiple Schwann cells are there which are responsible for myelination of the myelinated nerve fibers in the peripheral nervous system. The same function of myelination in the CNS is done by the oligodendrocytes. But the another difference is
that the oligodendrocytes are capable of myelinating multiple fibers. उल्टा है, periphery में single nerve fiber require multiple Schwann cells for the process of myelination. In the CNS, single oligodendrocyte can myelinate multiple nerve fiber. Okay, तो इसका जॉब बड़ा है थोड़ा पेरिफेरी के मुकाबले में. थर्ड इज द माइक्रोग्लाया. तीसरे तरह का कनेक्टिव टिश्यू सेल है. दे आर जस्ट लाइक द मैक्रोफेजेस इन द पेरिफेरल टिश्यूज. पेरिफेरी में जो मैक्रोफेजेस काम करते हैं वही सीएनएस में माइक्रोग्लाया करते हैं. दे आर फेगोसिटिक सेल्स. दे आर हेल्पिंग इन द रिपेयर ऑफ द डैमेज्ड टिश्यूज इन द ब्रेन. एंड वेयर दे कम फ्रॉम, दे आर, इनका एंसेस्टर वो ये बोन मैरो में है कि ऑल द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स कंसर्न्ड विद द रिपेयर प्रोसेस आर arising from the bone marrow itself. They are also arising from the bone marrow, and during the fetal development they migrate to the brain and form the microglia. Satellite cells are present in the dorsal root ganglia and the cranial nerve ganglia. ये मैंने बताया था ganglion cells में होते हैं satellite cells, and they help in the communication within the neurons of the ganglia. Regulate microenvironment of the ganglia cells like the astrocytes. Now come to the neurons. न्यूरॉन की शक्ल सूरत के बारे में बात करें. न्यूरॉन कैन बी यूनिपोलर, एक ही पोल है उसके कुल मिलाकर के. ठीक है, क्या मतलब इसका? सेल बॉडी एंड वन प्रोसेस. So any neuron, if it has got single process, it will be always an axon. डेंड्राइट नहीं होगा. तो इंफॉर्मेशन कैसे लेगा? वो इंफॉर्मेशन लेगा सोमाटा. सोमा की जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल बॉडी की जो सेल मेम्ब्रेन है, दैट विल एक्ट एज अ रिसेप्टर. रिसेप्शन करेगी, दूसरे न्यूरॉन से कम्युनिकेट कर सकती है वो, कोई दिक्कत नहीं है. तो यूनिपोलर न्यूरॉन इज अ न्यूरॉन विच हैज गॉट वन प्रोसेस and that process is always an axon. Bipolar, two processes, एक axon होगा, एक dendrite होगा. Dendrites are the process which receive the information from other sources, while axon transmit the information from that neuron to the other neurons in the brain. Pseudo unipolar भी हो सकता है, कई चीजें pseudo होती हैं. Pseudo bipolar भी हो सकता है, दोनों ही तरह के नाम दे सकते हैं. These cells are mostly found in the डॉर्सल रूट गैंग्लिया. डॉर्सल रूट गैंग्लिया जो कि आपके सारे सेंसेशन को रिसीव करती है बॉडी पेरिफेरी से, वो जो न्यूरॉन्स हैं उनकी एक प्रोसेस आ रही है पेरिफेरी की तरफ जहां पे रिसेप्टर लगा हुआ है, दूसरी प्रोसेस उसकी जा रही है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, एंड इट इज कम्युनिकेटिंग विद द अदर न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड. So a single process emerges from the neuron and it divides into two. A peripheral branch is there and a central process is there. So only single branch is emerging, single root is emerging. So it can be called as a pseudo unipolar. बाद में जाके दो में डिवाइड हो गए, और it can be pseudo bipolar also. प्रोसेस एक ही निकल रही है और वो पेरिफेरी में भी जा रही है और वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी जा रही है, सेंट्रल प्रोसेस. मगर दोनों की दोनों एक्सोन में ध्यान दीजिएगा, दोनों की दोनों प्रोसेस एक्सोन है. दे आर नॉट डेंड्राइट, स्टिल दे आर कैरिंग इंफॉर्मेशन इन द रिवर्स डायरेक्शन. एक्सोन का काम है दूर इंफॉर्मेशन को. यहां कुछ उल्टा हो रहा है, एक्सोन निकल रहा है, पेरिफेरी में जा रहा है, वहां से इंफॉर्मेशन गैदर करके सेल तक ला, स्टिल इट इज एन एक्सोन. और उस एक्सोन का जो दूसरा हिस्सा वो सीएनएस के अंदर स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है, अंदर जाकर के वो इंफॉर्मेशन अवे ले जा रहा है. तो सेम एक्सोन इज परफॉर्मिंग बोथ फंक्शन, taking information toward the neuron and taking information away from the neuron also. So that is the pseudo bipolar or pseudo unipolar cells. And then most of the neurons in the brain of course are multipolar cells. One axon and multiple dendritic processes are there. वो multiple process एक से लेकर के 1000 तक हो सकती हैं. It can be thousands in number from a single neuron. It can emerge. The cell body, as you know, contains a prominent central nucleus. Nucleus हर सेल के अंदर होता है करीब करीब, आरबीसी को अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, निसल granules. They are RNA granules. They are specifically found in the neurons only. बॉडी में और कहीं नहीं होते निसल granules. Neurofibrils are there, microtubules, centrosome, ये सब पड़ा हुआ है. And most of the neurons have got a well-developed biosynthetic apparatus. क्योंकि ज्यादातर न्यूरॉन्स को अपने कम्युनिकेशन के लिए
केमिकल सिंथेसाइज करने पड़ते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो उनको सिंथेसाइज करने के लिए सिंथेटिक एपरेटस होना चाहिए। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर बहुत सिंपल होते हैं, ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं होती। कई बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उसके लिए आपको प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी पूरी चाहिए होती। तो ऑलमोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स आर entrusted or endowed with the synthetic process in their cells. Then in the axon we have got an area which is known as axon hillock. Axon hillock is the initial portion of an axon when it emerges from the cell body of the neuron. Neurons के जहां से axon निकल के आ रहा है, that small portion at the joint पे जो आ रहा है वो थोड़ा सा डायलेटेड होता है, उसको हम कहते हैं एक्सोन हिलक। ये एक्सोन हिलक इंपॉर्टेंट है, इसका पढ़ लिया होगा नर्व फाइबर में। इट इज द साइट वेयर द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ द फास्ट सोडियम चैनल्स आर देयर, एंड बिकॉज ऑफ दिस इट इज capable of generating a propagated action potential. Mind it, in most of the neurons, dendrites do not generate action potential. The information in the dendrite is by the electrotonic conduction. Point to point conduction is there. Action potential is not produced there. Action potential in the neuron is not produced over the cell body also. Cell body पे भी action potential generate नहीं होता. The only site which is capable of generating a propagated action potential in a neuron is the axon hillock, which then travels down to the axon to the termination. So axon transmits action potential, neurotransmitter synthesize होते हैं cell body के अंदर, वो periphery तक जाते हैं, trophic factor synthesize करता है neuron, they also go to the periphery. Neuromodulators are there. What are neuromodulators? Neuromodulators are the chemical substances which are actually not typical neurotransmitters. They do not take part in the communication between the two neurons, but they can modulate the activity of the actual neurotransmitter. जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, मतलब मॉड्यूलेट कर सकते हैं. Such substances are released by certain neurons and we call them as the neuromodulators. And all these things which are produced by the cell body, mostly they flow by the axonal flow and reaches to the periphery where they are released into the synaptic junction. Then we have the soma, means cell body. Soma is cell body of the neuron. इसका क्या function है? This is capable of receiving information. Information आ रही है electrical signals के रूप में, ध्यान दीजिएगा, और कोई information नहीं है. So it is a site for reception and integration. Integration का मतलब एक सोमा नर्व सेल का सेल बॉडी है, उस पे 10,000 तक इंफॉर्मेशन आ सकती है. Many neurons are sending information to a single neuron. ये जो न्यूरॉन पे इंफॉर्मेशन आ रही है, they are excitatory also, they are inhibitory also, meaning they can hyperpolarization of the soma, they can cause depolarization of the soma. So all these informations are summated together. उनका जोड़ बाकी गुणा बात होता है वहां पे, और जो अल्टीमेट इंफॉर्मेशन आती है वो पहुंचती है एक्सोन हिलक के ऊपर. वहां डिसाइड होता है कि एक्शन पोटेंशियल फायर होगा या नहीं होगा. So that integration of the information received, that occurs at the soma level. So all the information input is put there, and ultimately the decision is taken whether the neuron has to fire an action potential or not. Dendrites, of course, are the reception and transmission. Dendrites are the portions where the multiple synapses can take place. So all the information from other neurons beside getting at soma are received at the dendritic tree, because that offers a large amount of the surface area for the reception of the information, and then the information that is transmitted to the cell. सोमा तक लाते हैं वो, डेंड्राइटिक फैल रहे हैं, वहां से इंफॉर्मेशन आई और वो ट्रेवल डाउन होकर के सोमा तक आई. Now it makes a lot of difference here. This is the neuron, look at me, this is the neuron and multiple dendrites are there. This dendrite is receiving information at this place from this neuron. The same dendrite is receiving information of other neuron at the higher place. ये यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफी कम रह जाएगी, because local
electrical phenomena is decreased as it travels down the nerve fibers. ये नर्व में पढ़ा होगा आपने, इलेक्ट्रोटोनिक कंडक्शन जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो यहाँ पे जो 10 मिली वोल्ट का चेंज क्रिएट हुआ था वो सेल बॉडी तक पहुंचते पहुंचते 2 मिली वोल्ट का रह जाएगा। तो यहाँ जो इंफॉर्मेशन आई उसकी अहमियत कम रह जाएगी इसके लिए, और जो यहाँ इंफॉर्मेशन आई वो यहाँ तक पहुंचने में कम समय लगेगा। लेंथ कांस्टेंट इज लेस, लेंथ कांस्टेंट लेस, और इसका मतलब इसका इन्फ्लुएंस सेल बॉडी पे ज्यादा आएगा। सो दिस इंफॉर्मेशन विच इज नियर टू द डेंड्राइट सेल बॉडी will have a more influence over the activity of the neuronal cell rather than that is at the farther place. तो ये समझने की बात है कि जो लेंथ कांस्टेंट, ये पढ़ा दिया होगा लेंथ कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट क्या होता है नर्व फाइबर के अंदर, ठीक है। तो वो इन्फ्लुएंस करेगा कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस एरिया से आ रही है, वो इस न्यूरॉन के ऊपर कितना इफेक्ट डालेगी अल्टीमेटली। दैट इज डिटरमिन्ड बाय द डेंड्राइट्स। So dendrites are actually modifying the information also. They are not only conducting the information, they are modifying the information also. By the phenomena of what is known as the summation, by the process of spatial summation and temporal summation. इसके बारे में कुछ जानकारी है, आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं बताएंगे इसको। ये न्यूरॉन के डायग्राम है। See the dendritic tree, you can say huge. It can collect lot of information from lot of sources in the brain. नर्व फाइबर्स के बारे में पता है सब, ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नोड्स, इंटरनोड्स आर देयर, स्वान सेल्स आर देयर, सेल बॉडी इज देयर, एक्सोन हिलक इज देयर, ये डायलेटेड पोर्शन दिख रहा है, एक्सोन हिलक इज देयर। अनदर थिंग, ये देखिएगा, ये जो नर्व फाइबर आ रहा है इसके अंदर, और फिर दो हिस्से हो गए, मगर जो ये ब्रांच हुआ उसका भी डायमीटर उतना ही है जितना इसका डायमीटर है। बिकॉज वी नो दैट एन एक्सोन conducts the information with a certain velocity or speed, and that is determined by the degree of myelination and degree of thickness of the fiber. उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। और वो क्यों बढ़ रहा है पता है ये, कि डिग्री ऑफ माइलिनेशन बढ़ने से कंडक्शन वेलोसिटी क्यों बढ़ जाती है। व्हाट इज द रीजन दैट अ लार्जर डायमीटर फाइबर, myelinated fiber, conducts with a greater velocity, smaller diameter fiber conduct with less, and even in the non-myelinated fibers the thickness of the fiber matters. That determines the velocity of conduction. Why? This is pure physics. Physics and physiology दोनों है इसके अंदर। नॉन माइलिनेटेड में सिर्फ फिजिक्स है, माइलिनेटेड में फिजिक्स के साथ में फिजियोलॉजी भी आ जाती है। Because thickness of the fiber will determine the membrane resistance, internal resistance and the capacitance of the nerve membrane. Membrane capacitance and membrane resistance and internal resistance of the cell determines the velocity of conduction in the non-myelinated nerve fiber. In the myelinated nerve fiber क्या होता है बताइए, तुमने पढ़ रखा है ना नर्व का, कोई आइडिया है? कोई बात नहीं। You see, as the thickness of the myelin increases, there is increase in the internodal distance. ये नोड्स ऑफ रेनवियर हैं और ये इंटरनोडल पोर्शन है। ये माइलिन शीट की थिकनेस यहाँ आ रही है जो भी दिख रही है, इसकी थिकनेस को अगर हम बढ़ाएंगे तो उस नर्व फाइबर में हमने देखा है कि उसका इंटरनोड का डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाता है, दूर दूर हो जाती है। So internodal distance increases as the myelin sheath thickness increases. So ultimate outcome will what? Because we know that in the myelinated nerve fibers, conduction occurs by the saltatory mechanism. Impulse jumps from one node of NV to the another node. अब नोड का डिस्टेंस ही बढ़ गया तो उसको ज्यादा कूदने के लिए जगह मिलेगी, तो जल्दी जल्दी भागेगा आगे बजाय धीरे चलने के। So greater is the internodal distance, faster will be the conduction. एक बार में ज्यादा दूर तक कूदेगा वो तो जल्दी ट्रेवल करेगा। सो डिग्री ऑफ माइलिनेशन अल्टीमेटली इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन। ऑफ कोर्स द फिजिकल फैक्टर्स आर देयर आल्सो दैट आई हैव सेड, रेजिस्टेंस ऑफ द मेम्ब्रेन, रेजिस्टेंस ऑफ द टिश्यू एंड द कैपेसिटेंस ऑफ द मेम्ब्रेन
they determine the conduction velocity. जो मैं बता रहा था वो छूट गया. So it means that all the branches of the same axon ये डिवाइड हो रहा है, इसके बावजूद उनकी थिकनेस वही है. इट मीन द कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ ईच ब्रांच ऑफ द सेम एक्सोन विल ऑलवेज बी सेम, विल ऑलवेज बी सेम. ऐसा नहीं कि ये डिवाइड होकर के छोटे हो गए, पतले हो गए तो इनकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है. देयर साइज डायमीटर रिमेन सेम. देन वी हैव गॉट द ट्रोफिक फैक्टर्स. जैसा नाम सजेस्ट कर रहे हैं, ये ग्रोथ में मदद करते हैं. Neurons and connective tissue in the brain secretes many nerve growth factor, brain derived growth factor, neurotrophin 3, 4, 5, ciliary neurotrophic factors. They all help in the healthiness and growth of the nervous tissue. इन पे सब पे खूब रिसर्च हो रही है और बहुत ज्यादा मदद मिल रही है आदमी को डिजेनरेटिव डिजीज से बचाने के लिए. So ultimately we come to the same thing. Activity of the human being or the person or the animal depends upon three factors. What is the sensory input, how the information has been processed, and ultimately the expressing in the form of the motor output. ये कुल मिला के एक्टिविटी जनरेट हो रही है. Thus input, जो पहला कंपोनेंट इनपुट है, that is being sensed by the organs which are known as the receptors. So receptors are the transducers. टर्म वापस आ गई है. Receptors are transducers capable of converting different forms of the energy, environmental energy into the electrical signals. उनको हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं, वो रिसेप्टर का काम करते हैं. And these receptors in the body can be located at various sites, and that will determine their function also. So superficial receptors, if the receptors are located in the skin, subcutaneous tissue or the mucous membrane, then those are the superficial receptors. Deep receptors means receptors located deep in the tissues, that is muscles, tendons, ligaments, joint capsules. If they are located there, then they are deep receptors are there. Visceral receptors are located in the viscera, intestine में, liver में, kidney में. अगर रिसेप्टर मौजूद है तो वो विसरल रिसेप्टर्स कहलाते हैं. सेंट्रल रिसेप्टर्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आल्सो रिसेप्टर्स आर देयर, बेरो रिसेप्टर्स आर देयर. देन वो अलग हैं. इसके अलावा आपका कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन होती है मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर. देन ऑस्मो रिसेप्टर्स आर देयर इन द हाइपोथैलेमस, दे आर सेंट्रल रिसेप्टर्स. एंड ऑफ कोर्स द केमिकल रिसेप्टर्स आर देयर इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. मोटर आउटपुट in the form of the two ways. It can be a somatic motor output or it can be an autonomic motor output. And for the motor output, we know already there has to be an upper motor neuron, there has to be a lower motor neuron. In the autonomic system, we have got the sympathetic and the parasympathetic flow, which determines the motor activity or expresses as the activity in the form of the secretion, either increase or decrease, or activity of the cardiac muscle or the smooth muscle fiber. Somatic activity manifestation is in the two forms. Either the muscles contract or muscles relax. दोनों ही तरह की एक्टिविटी है. मसल को रिलैक्स करना भी जरूरी है. हमने देखा है कई you want a bicep to do some work, then triceps need to be relaxed simultaneously. इसको रिलैक्स करना जरूरी है. So those neurons which are innervating the triceps muscle must be inhibited simultaneously when biceps neurons are activated. Then only the biceps will be able to do certain work. So muscle activation and relaxation both are a component of the same part, same activity, need to occur simultaneously. Then in the autonomic system, we know what we determine: contraction or relaxation of the smooth muscle fibers, or change in the activity of the cardiac muscle fibers, or increase or decrease in the secretions also. Secretions का घटना बढ़ना, that is known as a, क्या कहते हैं इस एक्टिविटी को? Secretion एक तो मोटर एक्टिविटी है जब स्मूथ मसल्स कांटेक्ट कर रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं जीआईटी के मसल्स, और अगर सिक्रेशन हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं?
ना सूडोमोटर एक्टिविटी, इट इज नोन एज सूडोमोटर एक्टिविटी। अगर सिक्रेशन से रिलेटेड है तो सूडोमोटर एक्टिविटी कहलाती है। एंड सिक्रेशन ऑफ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर अफेक्टेड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। द सेंट्रल प्रोसेसिंग occurs at two sites in the brain. One at the synaptic processes where the two neurons are communicating. The processing is going to take place. Okay, and the processing also occurs in the cell where the information is reaching in the form of the storage of the information, and that we call as the memory. तो information की जो processing है वो दोनों जगह हो सकती है, सिनेप्स में भी हो सकती है और सेल बॉडी में भी हो सकती है। देन वी हैव गॉट लेवल्स ऑफ कंट्रोल, आई थिंक वी विल टॉक लेटर ऑन अबाउट दिस।